Hey guys, thank you so much for joining me. I hope you're having a wonderful day as usual. Today we're doing it. We're watching Dhurandhar. Finally, I know a lot of you guys have been asking for it. I know it's a super popular movie in India, and so I'm super excited to find out what the fuss is all about. I want to mention that I'm going in this blind. I don't know anything about the movie. I just know that it's a spy movie. I know that Ranveer Singh is starring in it, and I absolutely love Ranveer Singh. I mean, he's a fantastic actor, and I believe this film tackles some pretty dark and heavy themes. So, I'm going to try and get into the mindset for that, and, well, let's discover this. So without any further ado, let's get started. I like the reflection of the plane on his glasses. Wow. Chapter 1, The Price of Peace. It's very high. The price of peace is very high, I'm going to guess. I mean, I'm not just guessing, I know it's very high. But I'm guessing in the movie, they're going to show us how high it is. That's what I meant. These guys look like terrorists. मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया। पीएम पर बहुत प्रेशर है। These bastards are about to break. 36 टेररिस्ट की रिहाई से 3 टेररिस्ट की रिहाई पे आ गए हैं। सर मुझे बस थोड़ा सा वक्त दे दीजिए ना, प्रॉमिस है हमें एक भी टेररिस्ट छोड़ना नहीं पड़ेगा। Unfortunately, this is it. Ooh. Ooh, that's dark. Oh! Oh my god! Oh! Oh, this is so violent and brutal. Whoa. बंदूक के नोक पर बातचीत नहीं होगी। Guess I'm guessing he's a terrorist. कल तीनों, मुश्ताक अहमद जरगर, अहमद उमर सईद शेख और आपके भाई मौलाना मसूद अजहर अपनी जेलों से रिहा करके यहाँ कंधार में आपको सौंप दिए जाएंगे। So this is inspired by true events. अब मैं पैसेंजर से अकेले में बात करना चाहता हूँ। And can you imagine being one of your hostages here? That's the stuff of nightmare. इस कठिन परिस्थिति में हौसला बनाए रखने के लिए हमारा देश सदैव आपका आभारी रहेगा। भारत माता की। Ooh. Is he going to take him hostage? भारत माता की। Or is he threatening the hostages not to reply to this? Wow. Oh, the music makes this so tense. हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है। सोने की चिड़िया कहलाता था ना आपका ये मुल्क। Was it? I didn't know that. सान्याल साहब, Whoa. पड़ोस में ही रहते हैं हम। कूदे भर का जोर लगा लो और बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। He will. I'm sure he will. This is going to be the topic of a movie. तो आपके हिसाब से अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए 160 मासूमों की जान को दांव पे लगाना बेटर स्ट्रेटजी है। In some situations, it might be, unfortunately. This is terrible to say, though. यूएन से भीख मांग ली, यूएस के आगे गिड़गिड़ा लिए, हमारे डिप्लोमेटिक रास्तों पे उन्होंने थूक दिया, कश्मीर घुसे, कारगिल घुसे, अब हैदराबाद तक घुसकर आ जाएंगे और हम यहाँ बैठे बैठे सारे जहाँ से अच्छा गुनगुनाते रह जाएंगे। सर मुंह तोड़ने के लिए मुट्ठी बंद करना जरूरी है। That's true. We must infiltrate the very core of terrorism in Pakistan. Sir, did I share my Kashmir doctrine with you? सही मायने में अमन की आशा उसे कहते हैं। Hope for peace. Well, when you're dealing with terrorists, I don't think hope for peace is really the best strategy. Ooh, it's the same people. Ooh. I'm guessing this is archive footage. आवाज चल रही है। नंबर 1 के आसपास यहाँ पर एक एनकाउंटर को रोकने की कोशिश की गई।
I have to admit that I'm not too much an expert on Indian politics and Indian history, especially recent history. I'm discovering all these things. I heard of it, but I don't know the details or anything. Oh! IC-814 के hijackers में से एक सनी काजी इस अटैक को लीड कर रहा था. He's been neutralized along with 3 others. Oh! We have to get it right every time. But these bastards have to get it right just once. That's such a good point, actually. That's a terrible thing with dealing with terror attacks. All they need is one that works. They can fail 50 times, but if there's one that works, they can do so much damage. किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो घर के अंदर तक घुस जाएंगे. पीएम काफी परेशान है. Who was the prime minister back then? I don't know if we're going to see him in the movie, but if you guys can let me know in case we don't see him. हाँ, एक सजेशन है जो पीएम को पसंद आया. To infiltrate them? Dhurandhar. धुरंधर. Is Dhurandhar the name of the operation? Is that what it is? कभी या कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि आज तो सिर्फ घर में घुसे हैं. कल छाती पर भी बैठ जाएंगे और फिर टूटने के लिए कुछ नहीं बचेगा. ना धैर्य ना हौसला. I will make it happen. Frankly, infiltrating the terrorist is probably the best solution to this problem. It would take a freaking long time, but if it works, you could really do something. You could really accomplish great things. Wow. The landscapes are absolutely magnificent. There he is, the man, the myth, the legend. He really is one of the best actors in the world. I'm not afraid to say so. I try to watch movies from all around the world. It's not always easy to find them in good quality, but I do my best to try and have a wide perspective. And I can safely say he's probably in my top 5 or top 10 of the best actors. Corruption, a classic. I really like the way this is lit so far, because you can see pretty harsh highlights and shadows, but at the same time, the overall image stays really soft, so it's very pleasing to the eye. They managed to get just the right balance so that it looks and feels real, but also beautiful at the same time. It's really not easy to do, because if you have a lighting that's just too beautiful, it loses realism. But if you have a lighting that's not beautiful enough, it's not pleasing, it's not cinematic. Wow. He looks fantastic. Are these real people, or are they characters in the movie? By the way, if you guys can let me know how much of this film is real and how much of it is just fiction, I would really appreciate. Darling, darling, dil kyun toda? Pilo pilo alam tud soda. He's very enthusiastic. Darling, darling, dil kyun toda? Pilo pilo alam. Can you imagine yelling this all day? That would be so annoying after a while. यहाँ कोई काम मिलेगा? नहीं भाई, सिर्फ जूस मिलेगा. लूण किधर? Whoa, he's very insistent. I love orange light on him. Looks great. Beautiful. Oh. That's fucked up. Oh, yes, please. Oh, why did he stop? Come on, you better react, because I have a feeling they're going to kill you otherwise. That's very lucky. I don't know if it really happens that often to have the police in a place like this. And more importantly, to be able to count on the police. नाम क्या है? हमदानी मसाली. Wow, that actually looks really good. I want one now. रहमान बलोच की जानिब से लियारी को रमजान मुबारक हो.
Can you imagine how difficult it would be to complete such a mission? To infiltrate terrorism in a foreign country? How you have to leave everything behind and your entire life becomes this. And even just a single mistake can ruin everything in an instant. Wow, I cannot imagine the pressure. अपने व्हाट्सएप चाय में नमक डाल के यहाँ के लोगों को वाहियात लगती है, लेकिन मुझे पसंद है। मेरे गांव में सिर्फ Salt in his tea. तो चाय भी नमकीन बनती थी। यहाँ की चाय मुझे मेरे घर की याद दिलाती। That actually makes a lot of sense. Only someone who grew up with it, I think, could appreciate it. I would probably have the same reaction. The Bastard King of Liari. Liari? I'm not sure how it's pronounced. Sorry if I mispronounced some words or some names. ये चिकना लीची कहाँ से लाया? Baburakit. Ooh. He's not done. But I have a feeling it's not always going to go the same way. Oh, I love this music. Oh, that was so good. कल के वली में रहमान खुद नहीं आएगा, पर उसका बेटा नईम जरूर आएगा। दूल्हे के बचपन का दोस्त है वो। There are so many characters I'm starting to get lost as to who's who and who controls what. So I apologize if I ever said something stupid. वली में से निकलते वक्त नईम पर बाबू डकैत के 3 लड़के हमला करेंगे। अगर नईम को बचा सके तो एक झटके में रहमान डकैत की नज़र में आ जाएगा। गोली कहीं से भी निकल सकती है। इस काम में जान का खतरा हो सकता है, या कोई और तरकीब लगाएं। मैं बचा लूंगा लड़के को। Okay, interesting mission. बचा लूंगा लड़के को। And if you save his son, you'll definitely be in his good grace. आप लेंगे जूस? Seriously, the drinks look so good. I'm sorry, it's a fan of cocktails in me. Wow, what a beautiful venue. Okay, so that's the son. Good to know. बच्चा कौन है इसके साथ? ये रहमान बलोच का छोटा लड़का है, फैजल। Ooh, can you imagine the tension trying to guess where the bullet is coming from? Oh, okay. I have a feeling they're not going to be subtle about it. Okay, it's a lot easier than I expected. But now what do? Do you attack them directly? What's the best course of action here? Let's be honest, if he can save Faisal, that's also a win. Whoa! Oh, what a beautiful shot! The slow-mo was absolutely perfect. Okay, don't move, man. Just stay where you are. Honestly, it's crazy how, despite such an upbeat music, it's still so tense. Oh! Well played. Ooh! There you go. You got your revenge. Assuming he's dead, I'm not sure. No, he's not. Okay. Oh! Whoa! I genuinely thought he succeeded. Wow, what a twist. But at least they saved Faisal, so... मर गया ये, निकल यहाँ से। छाती दबाओ इसकी, छाती दबाओ। अरे बच्चे को गोली लगी है। एम्बुलेंस को बुलाओ, खून रोको। अरे भाई कोई मदद करो। एम्बुलेंस! Yes, it was a better choice not to leave. Herman Duckett. Now, they should be grateful to him.
No matter what happened, he genuinely tried to save him. So he is dead. कितने लड़के थे? 3। एक के पास ग्लॉक थी, एक के पास उजी, एक के पास AK-47। एक का कुंडा कटा हुआ था। या अल्लाह, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ओए मेरे मौला, ओए ये क्या कर दिया? जैसी मुझे खबर मिली, मैं खुदा कसम नंगे पांव दौड़ा चला आया। Okay, who is this? साले बाबू डकैत हरामी, तेरे नूनू में पानी भर जाए दल्ले, इलेक्शन हो जाए फिर तेरी गांड मारूंगा मैं। बंदूकों के बारे में बड़ी मालूमात है तुझे? Yes, I was going to say, he said a lot. It could be a good thing, but that could also be a bad one. इसे 1 लाख दे। मुझे Whoa. पैसे नहीं चाहिए। क्या बोला? मुझे पैसे नहीं चाहिए मियाँ। So what do you want? आजादी से लेकर आज तक पाकिस्तान में हम बलोचों को कभी अपना हक नहीं मिला, इज्जत नहीं मिली। आपने हमें पहचान दिलाई। उसके बदले में मेरे हिस्से में जो बन सका मैंने वही करने की कोशिश की। मुझे इसके पैसे नहीं चाहिए। Flattery. That's a pretty smart move to try and get into his good graces. और हाँ, एक अलविदा दो इसे। An Alvida? What's that? Oh, a gun. Fair enough. Okay. I don't know my guns, unlike the main character. Is it his wife? Yep, she's the boss. She's the only one who could do that. And as a man, he failed to protect his son. So, in a very traditional culture, that's a bad thing. To be fair, in my opinion, it's a bad thing anywhere. It doesn't matter if it's traditional or not. याद है ना 97 के इलेक्शन में क्या हुआ था? उससे ड्रामे किए थे। Okay, so he didn't come barefoot. Jamil Jamali, member National Assembly, Pakistan. देखो, अपने भाई पे नजर रखो। अकेला मत छोड़ना इसको। कसम है तुझे मेरी, तू मेरा मरा मुंह देखेगा, मेरा मरा मुंह देखेगा। खा कसम मेरी, खा। ठीक है। शाबाश, मेरा समझदार बच्चा। He's really typical of a politician. Really slimy. Like, he doesn't care about anything but himself and being elected. The rest doesn't matter. And I can tell you something, it's the same thing everywhere. The same thing where I'm from. It's the same thing in Australia, where I lived for a while. And I have no doubt that it's the same thing in India and in Pakistan. Politicians are arguably the worst kind of people on earth. You know, I can tell this is filmed on extremely good camera and lenses. I'll show you an example when we see it again. A detail that shows the quality of the lenses. But we're not seeing it now, so I'll tell you later. कर्रा आदम खेल से बेहतर जाली असला बनाते हैं हम यहाँ। पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ा नकली बंदूकों का कारोबार है हमारे यहाँ। Fake gun. उसके अलावा हो गई बट्टा वसूली, किडनैपिंग, कच्ची शराब, चाइना कटिंग, रमी क्लब, सियासी कत्ल वगैरह वगैरह। The whole hypocrisy of religion. We're not supposed to drink alcohol, but they still make it. ये भी यहीं पे बनती है। एक ट्रिगर में 30। The production design of the sets is incredible as well. It's beautiful. शाहबेग लेन, सिंगू लेन, ये कुछ इलाके हैं अरशद पप्पू और बाबू डकैत के हाथ में। लेकिन वो टंकी देख रहा है, वहां से आगरा ताज कॉलोनी, आलमा इकबाल कॉलोनी। Wow, what a view. ये एसपी असलम कौन है? एक शैतान और एक जिन में जबरदस्त सेक्स हुआ। 9 महीने बाद जो पैदा होगा। पूरी लियारी जानती है कि हमलावर मशहूर पठान गैंग के सरगना बाबू डकैत के गिरोह से थे, लेकिन कहीं भी किसी तरह की गिरफ्तारी की कोई खबर नहीं है। हैरत अंगेज बात यह है कि रहमान ने भी अब तक कोई जवाबी हमला नहीं किया है। Ooh, they're provoking him. They want him to act. या फिर रहमान डकैत अपनी ताकत खो चुका है? ले, मैं नहीं पीता। अरे पी ले, इतना जिंदा रह के क्या करेगा? पी ले। चल चल चल। हमजा। Are Muslims allowed to smoke this? I don't know, maybe they are. I'm not the biggest expert on religion, guys. I'll be very honest with you. I have a very rough understanding of the main ones. So I'm more than happy for you to tell me in the comments
what I'm missing. भाई बदला तो लेना चाहिए लेकिन अभी नहीं, इलेक्शन के बाद. I like how almost every shot in this scene is what we call the dirty shot. It means that you always see someone, the back of someone, in the front of the frame. And this creates a more confrontational aspects to the scene. And that builds up the tension. तू मेरी जगह होता तो क्या करता? I would strike back. There you go. खराब हो गया तेरा छूके. बोल. Also, the smoke is helping creating that tension. दुश्मन ने आपके बेटे को बेरहमी से मार दिया. बादशाह अगर इंतकाम न ले तो बेइज्जती पूरे कौम की होती है. और अगर आप इलेक्शन जीतने के मकसद से बदला नहीं ले रहे हैं तो आप ये इलेक्शन कब का हार चुके हैं. बाबू ने इसी वक्त में हमला किया क्योंकि उसे यकीन है कि इलेक्शन के चलते पीएपी आपको कभी जवाबी हमला नहीं करने देगी, कि वो बिल्कुल तैयार नहीं बैठा होगा. He's making such a compelling argument. और अब लियारी में हुकूमत You. शेरे बलूच की होगी. That was close. Ooh. There you go. You got your revenge on this one. Well, I won't cry for him, I can tell you that. और अगले 40 मिनटों के लिए रास्ते और गलियां खाली चाहिए. ठीक है जी. चले अल्लाह हाफिज. Ooh, he picked up smoking pretty quickly. Ooh! Boom! Not even looking back. Like a true hero. Oh! Oh, that hurts. Oh! No hesitation. Wow. Oh! Oh, I love the way this is filmed. Oh, this is so good. Look at these moving shots. Do you know how insanely difficult it is to film this? It takes such talent. Oh! Oh my god! Oh! Whoa! On the fences. Oh! Oh! Oh, that's gruesome! Wow. That's sending a message. Insane. Can you imagine living in a city like this and being a bystander to all of this? Wow. You know, another thing I love about this movie is the colors. It's all tones of brown and green and grey, and it just works so well for the theme of this film. Oh yeah, I heard of this practice, but I don't know what it's about exactly. You know, when they hit themselves on the back. This man looks oddly not in control. I can't help but feel like he may be the face of this whole organization, but he feels very tense all the time. Oh! Ouch! पीछे पीछे कोई बीच में नहीं आएगा. Yeah, you better kill that guy before he gets to shoot. Okay, that's an incredible shot. Yeah, this man definitely has anger issues. He's unstable. बच्चे को नहीं मारना चाहिए था बाबू. Ooh!
Ouch! Oh, I could never watch this if I was a bystander. आज से लियारी में बलूचों की हुकूमत होगी। जो भी दगाबाजी करेगा उसका यही असर होगा। Wow, that's a hostile takeover if I've ever seen one. ऐसी जीत लियारी की तारीख में पहले कभी नहीं देखी गई थी। So what does the PAP stands for exactly? Like, where do they stand in the grand scheme of Pakistani politics? मैं आपकी आंखों में आंख डाल के देखता हूं तो मुझे ये चमक कह रही है कि मेरे लियारी को बदल डालो, और ये चमक चीख चीख के ये भी कह रही है कि हमें अब एक रोशनी तब्दीली चाहिए अपनी जिंदगी में। He's going to make plenty of empty promises, just like every other politician. Yes, he's the real king of Liari. You're nothing but a puppet, mate. Talking about the politician, of course. Sorry, I forgot his name. कहा जा रहा है इस जीत का सेहरा रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत के सर। Wow, what a beautiful shot. Wait, is there going to be a little bit of a love story? It varies. It was definitely not on my bingo card for such a serious movie. पापा इलेक्शन जीते और तुम यहाँ बैठी हुई हो सड़ी हुई सी शक्ल बनाकर। Oh, she's the daughter of a politician. Interesting. ये तो तुम्हारे पापा ने इन गुंडे मवालियों के साथ वास्ता बना रखा है और एक तुमने मेरी Well, जगह में आफत। you can get married to Hamza. I mean, I know it's not his name, but same. I mean, she's a very beautiful woman. I understand why Ranveer's character would be madly in love at first sight. Completely understandable. अरे आप ही की पार्टी का हिस्सा रहूंगा, मगर एक अलग पहचान के साथ, ताकि मुस्लिम मूवमेंट पार्टी की वोट को काट के आपको दे सकूं। That's a pretty smart plan to ensure victory. हाँ तो तुम क्या खड़ी हो? बैठो अंदर। क्या बात होती है? पहले मेरा फोन पकड़ो फिर मेरा फोन फेंको। बकवास बंद करो अपनी तुम। That would be quite embarrassing. I'm surprised she's allowed to dress like this, though. I would have thought that in a country like Pakistan, they'd be a little bit more strict as to how their wives and daughters are dressed. But maybe I'm wrong. अगर ये बात सच निकली, तो मेरा ख्याल है एक माह में ये लोग तकरीबन 50 से 60 करोड़ के ऊपर का कारोबार करेंगे। I really like in this scene how they managed to have lights inside of the set that makes it look like the entire scene is lit by these lights when in reality there's plenty around them. It's called motivated lighting. ऐशकर। A motorcycle. Wow. And a beautiful one at that. I expected no less, that being said. Oh, wow. I'm loving these shots. With the lights and the blue lights and the red complementary colors. Actually, I don't know if they're complementary, but... I like how this film is showing the hypocrisy. I mean, they're drinking, they're smoking, they're partying, they're not dressing the way they're supposed to. Now, I don't know if it's too smart to try and get with a politician's daughter. The bodyguard is pretty smart, pretty switched on. He didn't get fooled. I like that. एसपी मकसूद, कैसे हो मियां? खैरियत? बर्गर बच्चों की अय्याश पार्टी चल रही है कासिम किले में। रेड मरवा दो, लाखों कमाओगे, लश हो जाएगी लाइफ।
Surely they would know about this party. Because they're not particularly discreet. Well played, well played. Whoa! Oh, I love the way the camera was moving with a motorcycle. That was so cool. Such a nice touch. See, again. Oh, that was so cool. Taunting them, I like that. माफ कीजिए, लगता है तेल खत्म हो गया है। Well, you ran out of fuel at the right time. पास में ही है मेरा घर, मैं चली जाऊंगी, शुक्रिया। Oh, unless he did it on purpose. आप भी अब्बू के साथ पॉलिटिक्स में? सच आपके लिए शायद बहुत कड़वा होगा और झूठ बोलने की आज मेरी हिम्मत नहीं है। हिम्मत तो ऑलरेडी आज आप बहुत दिखा चुके। आप अपना कड़वा सच मुझे बता सकते। मैं रहमान बलूच की गैंग में काम करता हूँ। उसके सारे काले धंधों में उसका साथ देता हूँ, मगर शायरी का भी शौक रखता हूँ। मीर, फैज, इकबाल, गालिब नशे नहीं करता, शराब नहीं पीता, एक आध सिगरेट पी लेता हूँ। कभी किसी लड़की के साथ बदसलूकी नहीं की। He's playing it so well. He's giving that I'm really tough and strong vibe, but at the same time, really soft inside. Women love this. और कड़वाहट चाहिए, आज के लिए इतना काफी है। आपकी अमानत रह गई थी मेरे पास। And he has a little gift for her. See, she's loving it. Women are not as complicated as a lot of guys say they are. Just like we guys are not as complicated as some women think we are. Works both ways. See, I knew he still had fuel. Well played. Oh yeah, it's been a while since we've seen that character. Oh, is this a sign? Plates of 501 Indian currency notes acquired by Kananis. पता करो मिनिस्ट्री में किन लोगों ने इनकी मदद करी है। हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी ही है। Yes, I'm guessing in a country as corrupt as India, there would be a lot of people who would be willing to do anything for a quick buck. Which is sad because India is such a beautiful country, such a wonderful place. The fact that there are some people who don't care about anything but themselves. That being said, it's true of any country. It's just that when your country is in a difficult spot, suddenly those self-serving people can become a major problem for everyone. A lot more than in a country where things are going well. Wow. Can you imagine seeing so much money? One can only dream of owning so much money. I know it's fake money, but still. अब्दुल बटावी आजम चीमा जी जनाब। मुरीद के में मुजाहिदों का सबसे बड़ा ट्रेनिंग कैंप चलाते हैं। अच्छा। और ये है दाऊद सईद गिलानी उर्फ डेविड हेडली। ये मेजर इकबाल के साथ काम करते हैं। Oh. I don't remember the name of this condition where you have two different eye colors. फिर तो मैं वादा करता हूँ कि लहरी का अगला इलेक्शन आप ही जीतोगे। और आप हैं मेजर इकबाल ISI से। इनकी मर्जी के बगैर पाकिस्तानी सियासत का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। आइए काम की बात शुरू करें, बैठिए। रहमान भाई, The way Rahman is constantly having his head tilted like this is a real sign of instability. मेजर साहब को तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। हाल ही में ISI और रेंजर्स ने BOF के बहुत से दहशतगर्द मारे हैं। इंटेरोगेशन के नाम पे इन्होंने उनके 70 रिश्तेदारों को भी तो मरवा दिया भाई। Yeah, you messed up by laughing. लेकिन रहमान भाई, पाकिस्तानी सियासत में आज तक जिसने भी हुकूमत की है
वो सब कुछ ना कुछ गलत हरकत करके ही ये मुकाम तक पहुंचे। अगर आपको इस हमाम में उतरना है तो नंगा तो होना पड़ेगा। That's an interesting comparison. It's an interesting metaphor. अगले महीने के पहले जुमे 3 अक्टूबर 10-12 मुजाहिद इंडिया जा रहे हैं। इस बार थोड़ा बड़ा मकसद है। उनकी रुखसती कराची से ही होगी, तो जुमेरात के पहले तक सारा माल खैरियत से हमारे पास पहुंच जाना चाहिए। सिर्फ माली तौर पर ही नहीं, मैं खुद सरवारी साहब से आपकी हिमायत करूंगा। इलेक्शन मुबारक हो। और जो वादा किया गया उसे भूलने की गुस्ताखी मत करना। आप तो जानते ही होंगे, रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है। Yes, and he's proved it already. हाँ बोल जावेद। आया था, लियारी छीनना चाहता है आपसे। रहमान ने अगर अपने पर फैला लिया तो आपकी कुर्सी भी जाएगी और इज्जत भी। अगर शैतान को मारना है तो चिराग तो घिसना ही पड़ेगा। लगता है कि अब जिन्न को आजाद करने का वक्त आ गया है। Now I'm guessing the police is going to get involved. The jinn. Wow. Interesting how it shows a white car in a white field. I'm guessing this must have to do with the dust. Though, a black car could look pretty cool with some white dust on it. Wow, what a shot! What a landscape! Where is this? Hey! Hey, he was in KGF Chapter 2. One of the best villains I've ever seen. Once again, looking super cool. This looks a little bit like a green screen. Cash? The blur in the background looks a little weird and fake. I don't know if it's because of the lighting, the way they lit this, or if it's because it was filmed in front of a green screen. I can't really tell right now. अरे फिर तो तुम हमारे भाई निकले। आओ तुम्हें बढ़िया चरस पिलाता हूँ। I like how we see the reflection in his glasses. Oh. मुफीद। मुफीद? Oh! Whoa! Okay, so he's from the police. कहाँ तक भाग लेगा? Is he missing on purpose? Oh! There you go, done. कोकेन में खुशबू नहीं होती लाले। माई वो चिट्टे के पैकेट में टैल्कम पाउडर कौन डालता है? हैं? अगर सरदर्द की गोली का चूरा भी डाल देता ना, तो शायद बच जाता। Ow! That's crazy. I felt the pain just by this little detail. हमेशा बोलता हूँ बड़े साहब को, मगरमच्छ पे भरोसा कर सकते हैं, मगर पे नहीं। Oh! Okay, he is indeed crazy. अपनों से ही गद्दारी कर रहे हैं आप। किनके साथ हाथ मिला रहे हैं आप? इन मादर के साथ, जिनके खिलाफ रोज हमारे भाई आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जाने जा रही है रोज। बच्चे कट रहे हैं, औरतों की इज्जत लूटी जा रही है। ये हमारी कौम खत्म करने पर तुले आप इन्हीं के साथ। You might be stepping out of line. You should be careful with what you're saying. तो कौन सा तेरी अम्मी छीने तुझसे साले? हैं? भाई मुझे सिखाएगा मादर। भाई मुझे सिखाएगा मादर। अब अंदर चल भाई, बच्चा है, रहने दो भाई, बच्चा है। अब तू यहाँ से जा, दिमाग खराब हो गया तेरा। मैं खाना बातें कर रहा है। Yeah, the brother is the one who's really in charge, if we're being honest. He's the smart one of the two. He's the stable one. कराची से क्यों? ना तो बॉर्डर पास है और ना ही हवाई जहाज पकड़ सकते हैं। मुझे भी लग रहा है।
बोट से ही जा रहे होंगे। गुजरात। I love the way this is filmed. Look how his face is in blue and green, like tones of blue and green, and behind him it's orange. That contrast is so beautiful. Usually it's done the other way around because skin tones are more orange. But when you invert it, you can create a sense of uneasiness because it's not natural. طق سيارة بوليس يلا يلا سوي لي رقصة ثانية رقصة البطريق ولا ستة في مان يا أخي دوس عندي خوش فصلة يا أخي تفوز والله خوش رقصة كان حلو ديكوريشن. I like the choice in costumes as well. The two brothers are in black, Hamza is in brown, and the characters around them are in white. That creates a clear distinction between each character and what they're standing for. अगर अगले महीने की जुमेरात से पहले मुकम्मल हो जाए तो हो जाएगा। Whoa! What an arsenal! I'm not gonna lie, shooting some guns in the desert like this would be pretty fun. I've never done it, but I imagine it would be pretty fun. रहमान डकैत को ज्यादा ही फड़फड़ा रहा है आजकल। 1997 में उसके एनकाउंटर करने का मौका था। उस दिन आप ही ने बचाया था उसको। Now you're regretting it. सुना है वो लेहरी के इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है। सगा और सियासत एक ही जुमले में नहीं आते असलम मियां। That's sadly very true. अरे जो अपनी अम्मी का कत्ल कर सकता है वो भला क्या किसी का सगा होगा। Yep. If you're willing to kill your own mother, you're probably not someone you can trust. बहन इस मुल्क में ना किसी को सही हुनर की कदर ही नहीं है। सस्पेंड भी आप ही ने कराया था मुझे। मैंने? Again, that's so typical of a politician, denying what he did. Like, oh no, it's not me. I didn't do that. I don't remember. We have the same here in France, trust me, guys. And they're not much better. ताकि तुम्हारे अंदर जो पिछले 60 साल से वो आतिश फिशा उबल रहा है ना उसका सही इस्तेमाल करना। ये है तुम्हारा रीजॉइनिंग लेटर। जाके संभाल मेरी लियारी। अब मेरा शेर पुत्र शाबाश। And just like ours, they are living in total luxury while the rest of us are struggling. लेकिन ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा। Ooh, what a twist. ये अकेले मैं नहीं कर पाऊंगा। लियारी की पुलिस का एक एक बंदा रहमान डकैत के फेहरिस्त अदाई पे होगा। अव्वल इनकाउंटर से पहले मेरा जनाजा उठ चुका होगा वहां से। अरे तो फिर हल क्या है मेरे भाई? You need to fire every single policeman. लियारी टास्क फोर्स। There you go. सिर्फ मेरे लड़के होंगे। आर्मी से असला चाहिए, फंडिंग चाहिए, ताकि मेरे लड़कों को घूस लेने की कभी जरूरत ना पड़े। टास्क फोर्स का एक सीक्रेट ऑफिस होगा जिसके बारे में बाहर वालों को कभी पता ना चले। Let's face it, he's right. That's the only way you can clean up an entire city. You only need people you can trust 100%. अपनी अम्मी पे गई लगती है बिल्कुल। पैसे पेड़ों पे उगते हैं। इतनी मेहनत करते हैं हम लोग, कभी लिपस्टिक ले दो, कभी सैंडल ले दो, दफा रहे यहाँ से। We have the same problem here in France as well, I can tell you that. I think this is a common experience around the world. Hey, they look great! I love Hawaiian shirts. I bet Ranveer would look great in Hawaiian shirts. To be fair, he probably looks great in everything. Wow, what a beautiful shot again. I'm not too familiar with Pakistan, but I'm not too sure you could do flirting like this in the middle of a street over there. But maybe I'm completely wrong, because obviously there's the cliche, like the image that we have of it from afar, and then there's the reality of it, which is sometimes quite different. Yeah, you shouldn't be playing with this. तकलीफ क्या है तुम्हारे अब्बू को? और पता है 45 पे जाके 27 की लड़की से निकाह। So what? Good for him.
तो दादा बनने की उम्र में बाप बने ना, इसलिए हमारे ख्यालातों में इतने फासले। और ऊपर से सियासती खानदान के बच्चों पर तो इतनी पाबंदियां होती है कि कोई नॉर्मल इंसान तो दम घुटने से ही मर जाए। बर्गर बच्चे से नहीं तो और किससे शादी करोगी? You? Yeah, you messed up, mate. Can you imagine the task of having to clean an entire city like this? One that's full of gangsters and terrorists? असलम वापस आ गया। अरे यार, ये जरवारी साहब को ना कब्रों में से गड़े मुर्दे उखाड़ने का शौक है। तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। बच्चा यार तू मेरा। अरे He's not burying it. He's very skeptical. You see? Look at the lens flares. These are the marks of anamorphic lenses. And anamorphic lenses are the most expensive lenses you can get. And they're the ones who give that very cinematic look, that cinemascope format that we're used to see in movies. ये आदमी तो अबू से मिलने आता रहता है घर। ये एसपी असलम। दोबारा घर आए तो नजर रखना इस पे। आपको खतरा है इस आदमी से? He is, but he's not a threat to other people, to good people, I mean. हमारा मानना है कि इन्हीं चंद घंटों में वो दोबारा जावेद खनानी और मेजर इकबाल से मिले और वहीं दुबई के होटल में उन प्लेट्स की रेप्लिकास दे दी। It's true that if you have the exact plates, your fakes suddenly become, well, just as good as real. गाड़ी चालू कर। भाई, सामान लेके खनानी के लिए निकलो। इसकी तबीयत खराब हो गई, अचानक अस्पताल लेके जा रहा हूँ। भाई हम भी चलते हैं ना आपके साथ। अरे निकलना है यार, डोंगा है मेरे साथ। और सुन, हिसाब बराबर देख। हरामी किसी के सगे नहीं है। Why does this feel like a trap? Why do I feel like the police is onto him? Like the special force? क्या हो गया? सब ठीक है? You'll notice that Hamza always have a lighter color compared to the other characters. It's a nice touch from the production to show him as the agent from India. See? He's in a light brown, where the others are in grey or dark brown. कमाल कर दिया रहमान ने। आई नहीं? वो किसी काम में मसरूफ थे इसलिए आ नहीं पाए। दुआ भेजिए। Why do I feel like something is about to happen? See, I told you! I felt like something was off. If you're lucky enough, you can survive this. I knew it was the policeman! I knew it! Ah, he looks so cool. And he's not messing around this time. I'm guessing the car is bulletproof, because otherwise we would all be dead already. That being said, a little bit of movie magic never hurts. जैसे ही मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, तुम इसे अस्पताल लेके जाना, ठीक है? रहमान। ये लोग तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। Won't they? If I was the police, I'm not sure I would stop there. Now, are they really going to just arrest him? That being said, if you want to get the rest of the gang to reveal itself, it's probably a good idea actually to just arrest him and then try to get all of them to come and free him. Or you can just kill him right away. And send a strong message. But I have a feeling it's not what he's trying to do here. पता चला किसी ने हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस को पहले से ही हमारे आने की खबर पहुंचा दी थी। मजे की बात तो ये है, खबरी का पता चल गया।
I'm guessing he's not suspecting Hamza. Because if he did, why would he just let him enter here freely? Alright, that's it for part 1 of my reaction to Dhurandhar. If you don't want to miss part 2, subscribe to the channel. It will be out in just a few days. As usual, thank you for watching, and I'll see you soon for another reaction. Cheers!